Mhm. Namaste, everybody. Welcome back to our weekly YouTube live on business. As in, when you join in, namaste, everybody. We had a great feedback of the last week's session, which was on leadership. और बहुत ही बढ़िया feedback आया on all the messages which you all sent me. Thank you for that. And it's nice that that the work is getting acknowledged, and more people are coming and listening to the videos which we have on YouTube. If you're there and you're listening for the first time, do subscribe to our channel. What we have done is, this has been a live-based channel for a good long time, and every Saturday morning we have our live telecast on a live-based subject, and we thought of starting a business session every week, at least once a week. क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि they had their questions when they would come for the Happy Mind session on Saturday morning. तो उनके कुछ questions business based होते थे, and I would want to answer those questions, but since the session would be on live, I would not be able to go in depth into those questions and give them answers. तो हमने सोचा क्यों ना फिर once a week एक हम session live करें on the business side. So here we are with our business session on YouTube. And last session which we had last week was on leadership, and today I will be speaking on entrepreneurship. दो बहुत बढ़िया which I call as the gems of entrepreneurship जो मैंने pick up किया in the last 25 years, 30 years of me being with entrepreneurs, and of course the last many years of being an entrepreneur. So my entrepreneur journey started way back when I was in school, and from there been an entrepreneur last so many years. So the last 5 decades of my life, I think almost 40 years have been into entrepreneurship. That's what I have been through, and from there दो बड़ी सुंदर चीजें मैंने pick up करी हैं, which I will share with you today. But a quick recap of what we did what we understood last week on leadership. हल्का सा recap करता हूँ आप लोगों के लिए. So I spoke on leadership की importance क्या है, and more so in the small and medium scale industry, because बहुत सारे entrepreneurs जो हैं, they jumped into entrepreneurship, they became an entrepreneur, they started their business, and over a period of time वो business बढ़ा, business में लोग जुड़े, and they ended up being leaders along with being entrepreneurs. तो businessmen तो बने, entrepreneur तो बने, लेकिन साथ साथ वो leader भी बन गए, because they had a team which they had to lead. बट अनजाने में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो लीडर तो बने, बट उन्होंने लीडरशिप के गुण नहीं सीखे, लीडरशिप की कैपेबिलिटी नहीं पिकअप करी, एंड उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करते गिरते पढ़ते जो सीख लिया, जो नहीं सीखा वो नहीं सीखा. बट over the years, and more so today, and it's going to be all the more important in the future, that we as leaders जो leadership position पे हैं, हम leadership का impact अपनी organization पे, हम leadership का impact अपनी team पे, हम leadership का impact on the world at large हम समझें. क्योंकि वो हमने सुने नहीं कहावत बार ऐसी कहा जाती है that people don't leave organizations, people leave their managers and leaders. And it couldn't be more true than this, because अक्सर जो नाराजगी होती है जो किसी टीम मेंबर को होती है, so it is not for against the company, because company क्या है, company तो एक समूह है लोगों का, it's a group of people, and उस ग्रुप को कोई ना कोई लीड कर रहा होता है. तो नाराजगी उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होती है, नाराजगी लोगों की उस लीडर से होती है जो उनको लीड कर रहा होता है. वो कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप में चूक जाता है, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना लीडरशिप का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, बिकॉज लीडर रोज मर्रा जो है, एवरी डे लीडर इज इन टच विद हिज टीम, लीडर इज इंटरैक्टिंग, लीडर इज डीलिंग, लीडर इज काइंड ऑफ इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. तो सारे लोग जो है वो जुड़े हैं उस लीडर के साथ किसी ना किसी रूप से. तो इसलिए उस लीडर को लीडरशिप समझना, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को समझना बड़ा जरूरी है. सो दैट्स व्हाट आई शेयर्ड लास्ट टाइम, दैट why leadership is so important. तो आप टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आ जाइए, आप सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजीज लेके आ जाइए, आप सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेके आ जाइए, यू नो, एंड यू कैन हैव योर बेस्ट ऑफ इंटरवेंशंस इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स बना लीजिए आप,
लेकिन अगर लीडरशिप पुअर है या लीडरशिप एब्सेंट है, तो फिर सब कुछ होने के बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए जो आपको लगता है विच इज बिग इनफ, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच यू फील इज वर्थ टॉकिंग अबाउट, तो आपको समझेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई लीडर था या है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को वहां तक लेके आया। कोई ना कोई लीडर ऐसा है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से वो सब संभव हो पाया। So organization is nothing else but a group of people who come together and they are chasing a common goal. और वो गोल को चेस कराने के लिए इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लीड कर रहा है एक इंसान जिसको हम लीडर बोलते हैं। फिर हमने ये भी समझा था कि लीडरशिप जो है वो है क्या। तो हमने लीडरशिप की डेफिनेशन समझी थी। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, आई वुड रिकमेंड दैट यू गो बैक एंड सी द वीडियो। इट्स स्टिल ऑन यूट्यूब। यू कैन गो बैक एंड सी दैट वंडरफुल वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन लीडरशिप। सो आई हैड स्पोकन अबाउट व्हाट लीडरशिप इज। तो एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप एक कला है जो एक इंसान के अंदर होती है, और उस कला से वो क्या करता है, ही मेक्स हिज टीम वांट टू डू। वो अपनी टीम के अंदर चाहत पैदा करता है वो काम करने के लिए जो काम जरूरी है। ही मेक्स हिज टीम वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ काम नहीं करवाता लीडर, लीडर जो है अपनी टीम के अंदर चाहत पैदा कराता है वो काम कराने के लिए जो जरूरी काम होते हैं। तो अगर आप लीडर हैं तो आप पूछिए अपने आप से, am I able to create that want, am I able to create that चाहत inside my team to do things which are important and necessary? अगर ऐसा है then this means you are on the right path of leadership. फिर हमने ये भी समझा था लास्ट वीक, I went a bit deep into it but I will not go because I have something else to cover today also. फिर हमने ये भी समझा लास्ट वीक कि लीडरशिप का फंक्शन क्या है। तो लीडरशिप का जो फंक्शन है वो है कि एक बड़ा कंपेलिंग सा एक विजन बनाना, उस विजन को शेयर करना टीम के साथ और लगातार टीम को इंस्पायर करते रहना उस विजन की ओर जाने के लिए। सो ये उसका काम है, लीडरशिप का फंक्शन है, उस पोजीशन का फंक्शन है कि क्या आप एज अ लीडर क्या आप एक बहुत बढ़िया कंपेलिंग एक्साइटिंग सा विजन दे पा रहे हैं अपनी टीम को। क्योंकि एज अ लीडर आपको दिखना चाहिए ना, एज अ लीडर आपको फ्यूचर दिखना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं दिख रहा तो टीम को कैसे दिखेगा। आप लीडर हैं मतलब आप उनसे ऊपर हैं, अपनी पोजीशन में ऊंचे हैं, अपनी सोच में ऊंचे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऊंचे हैं अपनी टीम से। सो इफ इट्स जस्ट लाइक अ फिजिकल लेवल कि आप फिजिकली उनसे ऊंचे हैं, कि वो लोग नीचे जमीन पे हैं, आप पेड़ की एक टहनी पे या पेड़ की एक ब्रांच पे आप खड़े हो, तो आपको बहुत दूर तक दिख रहा है बिकॉज आप उनसे ऊंचे हो। तो इन द फिजिकल रियल्म इफ दिस इज ट्रू, इन द लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट आप उनसे ओहदे में ऊंचे हो, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऊंचे हो। सो यू आर एबल टू सी मोर देन व्हाट दे कैन सी। और अगर आपको दिख रहा है ज्यादा तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप लोगों को बताएं कि आपको क्या दिख रहा है। और लोगों को सिर्फ ना बताएं, सिर्फ बताना काफी नहीं है, लोगों को ऐसा आपने शेयर करना है और कहना है देखो जो मुझे दिख रहा है। वो आप जब उनको बताओगे इस सुंदरता से बताओगे कि वो नीचे खड़े खड़े बोले सर हमें भी दिखने लग गया जो आपको दिख रहा है ऊपर से। और जब उनको जहां पर वो हैं उनको वो दिखने लगेगा जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ शेयर्ड विजन, दैट दे विल आल्सो ओन दैट विजन। तो आप जब एक पेड़ के ब्रांच पे खड़े हो और आपको सनसेट दिख रहा है और आप कहते हो देखो इतना सुंदर यहाँ से व्यू है कि सन इतना सुंदर लग रहा है, ऑरेंज सन से सन लग रहा है और नीचे 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 धीरे धीरे ढल रहा है और आप ऊपर से देख रहे हो और आप नीचे उसको बयान करते जा रहे हो और इतनी खूबसूरती से आप बयान करते जा रहे हो कि उनकी भी इच्छा हो रही है कि वो कहते हैं सर हमें भी दिखाओ। फिर आप उनको अपना हाथ देते हो, वो आपका हाथ पकड़ के ऊपर ब्रांच में आते हैं और वो भी वो देखते हैं जो आप देख रहे हैं। अ शेयर्ड विजन मेक्स पीपल विलिंग to come to a higher branch, to come to a higher level of performance, to come to a higher level of responsibility. So ये एक लीडरशिप का फंक्शन है, right? और वो ऊपर चढ़ते चढ़ते कहीं उसका पैर स्लिप होगा, कहीं घबराहट होगी, कहीं उसको लगेगा मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। So to keep on inspiring, that's what leadership is all about. And then you conduct leadership through various styles which you have with you. And I shared about various styles, how that impact is on people. And from there, I went on to share that there are three out of many qualities which a leader has. I spoke about three qualities of a leader. One which was that the leader has to be genuine. सच्चा होना चाहिए. How it is important for the leader to be genuine. सच्चा होना कितना जरूरी है, ऑथेंटिक होना कितना जरूरी है। और जब तक वो सच्चा नहीं होता लोगों की नजरों में, फिर लोग उसकी बात को सिंसियरली नहीं लेते, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर लोगों के मन में डाउट आ गया कि ये लीडर सच्चा नहीं है,
तो वो कितनी भी अच्छी बातें कर ले, कितना भी अच्छा विजन दिखा दे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो सच्चा होना बड़ा जरूरी है। ना सिर्फ लोगों की आंखों में सच्चा होना है, एक्चुअल लाइफ में आपके हर एक एस्पेक्ट में वो सच्चाई होनी चाहिए। और जब सच्चे होते हो आप, तो फिर आपको किसी बात का डर नहीं होता ना। फिर आप जैसे हो वैसे हो। फिर आपको किसी चीज को फेक नहीं करना पड़ता, किसी या चीज को आपको ऐसा बनावट करके दिखाना नहीं पड़ता। और जब बनावट नहीं होती, कोई फेक नहीं होता, तो फिर किसी चीज का मेंटेनेंस भी नहीं होता। मेंटेनेंस वहां लगता है जब हमने कुछ कहा हो और हम वो ना हो। तो फिर हम लोगों के सामने जब जाते हैं, जब, तो हमें घबराहट होती है, अरे हमने तो ये नहीं कहा था, या हमने तो ऐसा कहा था लेकिन हम ऐसे नहीं है। सो यू गॉट टू बी जेन्युइन। नंबर 2 हमने बात करी थी, दैट लीडर्स आर डिसाइसिव। ये अटकते नहीं है, ये स्टॉल नहीं करते, राइट। एंड जितने लीडर्स जो है, जिन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जिन्होंने अपने in terms of whatever positions they are handling, they have taken some decisive steps. कुछ गलत हुए, कुछ सही हुए, लेकिन वो रुके नहीं। बहुत से लीडर्स जो है वो डिसीजंस को होल्ड करते हैं, अच्छा करते हैं, कल लेंगे, अच्छा परसों लेंगे, सोचते हैं। आपको सोचना है सोचो, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये उस पोजीशन की, आपकी पद की, आपकी जिम्मेदारी है, दैट यू टेक अ डिसीजन। एंड घबराना नहीं है कि वो डिसीजन सही होगा गलत होगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, दैट यू आर सपोज्ड टू टेक अ डिसीजन। एंड द थर्ड पार्ट आई हैड स्पोकन अबाउट इज दैट द पर्सनल टच व्हिच इज देयर। इतना सिंपल पॉइंट है बट बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। एंड आई हैव बेनिफिटेड सो मच फ्रॉम हैविंग अ पर्सनल टच all throughout my life as a leader, whether it be through my career as a speaker and as a facilitator, but also in my organization. The personal touch has made a huge difference. So ये leadership की हल्का सा रिव्यू किया, so that you all are there and you're connected to this very thought, and एक रिविजन भी हो जाए आप लोगों का। And you can go back and see the video in depth, which is there. आज का सब्जेक्ट इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दो बड़े अच्छे जेम्स, मोती एंटरप्रेन्योरशिप के, which I would like to share with you. And this is a part of what I have picked up over the last many years. The first is, you got to understand that entrepreneurship is all about making irreversible leaps. Entrepreneurship is all about making irreversible leaps. तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो, आपके मन में है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको ये समझना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग दैट इररिवर्सिबल लीप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू टेक दैट लीप, मैं आपसे कह रहा हूं आप समझिए कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ लीप। अब आपको लीप लेनी है नहीं लेनी है वो अलग बात है, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग अ लीप। इट्स नॉट अबाउट स्टैंडिंग देयर and seeing all the options. Entrepreneurship is all about seeing the options and making that leap. और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि एक लीप काफी नहीं है, ये लीप आपको लेते रहने पड़ेंगे। As and when time comes, you have to keep on taking the leap. Another aspect of this is कि आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि ये सही समय है कि नहीं, कि is this the right time to take the leap or not. कोई राइट टाइम नहीं है। आपको एक दिन सडनली सुबह उठोगे और आपके यू विल गेट सम न्यूज फ्रॉम गॉड कि हाँ ये आज का दिन तेरा अच्छा है, ऐसा नहीं होने वाला। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई उसका कोई ऐसा राइट टाइम या राइट डेट नहीं है। आपको जब लगता है, आपने जब जो भी सोचा समझा रिसर्च करी, उसको बाद लगता है आपको कि यू शुड टेक द लीप, आई वांट यू टू मेक द लीप, दैट्स इट। बिकॉज इसके बिना जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। Because if you were to see every entrepreneur who's an entrepreneur, somewhere in his life he took that leap. और बहुत से लोग जो है अपने ऑप्शंस को देखते रहते हैं, and that's what they end up doing all their life. They keep on seeing the options. So if you see the options, that's what you will end up doing. You will keep on seeing the options. I'm saying, see the option and make the leap. बहुत साल पहले वन ऑफ द आईटी प्रोफेशनल्स, ही वाज अ पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, और मैंने काफी बार एग्जांपल ऐसे दिए हैं बहुत सारे, क्योंकि पिछले 25 सालों में बहुत से लोग मेरे से मिले हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके मन में बात थी दैट आई शुड बी इनटू बिजनेस, एंड आई ऑलवेज एंड अप सेइंग दैट लिसनिंग टू मी should not be the reason why you should make that leap.
But listening to me should be the reason why you have clarity, कि आपके पास क्लैरिटी आ जाए और आप वो लीप लेने के लिए तैयार हो जाए, या फिर आप लीप ना लेने के लिए भी आप तैयार हो जाए. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ये कुंजम कुंजम करेंगे सब. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से दे कम एंड से, सर ऐसा हम काम कर लें और वीकेंड में बिजनेस कर लें, चलेगा क्या? चलने को सब चलता है. आप वीकेंड में बिजनेस करो, आप घंटों में बिजनेस करो, आप इवनिंग में बिजनेस करो, सब चलता है. इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले बात करी थी ऑन दिस सब्जेक्ट कॉल्ड मून लाइटिंग, एंड वो वेयर प्रोफेशनल्स आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड देन दे टेक अप सम अदर असाइनमेंट्स. सो वो आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर आपको रियल में एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मेरे हिसाब से मेरी समझ ये बोलती है कि ये ऐसा जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता कि आप काम भी कर रहे हैं और आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप वीकेंड में आते हैं. सो यू आर अ वीकेंड एंटरप्रेन्योर. तो आप वीकेंड एंटरप्रेन्योर मत बोलो, यू आर अ वीकेंड गिग प्लेयर, कि आप वीकेंड में कुछ काम मिलता है पकड़ लेते हो. बट यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर बाय वर्किंग इन वीकेंड्स एंड रेस्ट ऑफ द वीक यू आर वर्किंग इन अ कंपनी. ऐसी मेरी समझ बोलती है. राइट, दे कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल. It's all about making that leap कि हाँ भाई चलो, now it's time for me to go into entrepreneurship. क्योंकि वो होता है कि आपने कहा कि मैं it's either, and देखो मैंने जो स्टेटमेंट बोला ना, it's all about making that irreversible leap. इसमें कोई रिट्रीट नहीं है कि आपने कहा कि यार आई विल रिट्रीट माय स्टेप्स, मैं रिवर्स गियर मारूंगा. रिवर्स गियर है ही नहीं इसमें, तो आपको वो लीप लेनी है. तो कमिटमेंट जो होता है ना आपका, जब आप कहते हो कि मुझे रिवर्स गियर मेरे पे है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका बिहेवियर अलग होता है. जब आपके मन में बात बैठी होती है कि हाँ आई कैन गो बैक, ये तो मैं नहीं चला तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपका बिहेवियर अलग होगा. जब आपको मालूम है कि नहीं इसमें मैं वापस में यू टर्न है ही नहीं इसमें, तो फिर आपका बिहेवियर अलग होगा. राइट, तो ये बड़ा जरूरी है ये समझना कि इट इज नॉट अबाउट मेकिंग अ लीप, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ इरिवर्सिबल लीप. कि आपने सोचा कि सिगरेट छोड़नी है, तो फिर वो सिगरेट जो है ना वो कुंजम कुंजम नहीं छूटती कि अच्छा ठीक है अभी मैं 15 सिगरेट पीता हूँ, कल से मैं 10 पीऊंगा, फिर परसों मैं 8 पीऊंगा, फिर ऐसा होगा ना. ना, इट इज वन डिसीजन, वन लीप. यू ड्रॉप इट एंड यू ड्रॉप इट. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, you jump into it, that's it. You can't say that I'm going to work for 3 days in the company and then 3 days like this, and मैं ट्राई करता हूं, अगर जम गया तो मैं जम गया, नहीं जमा तो मेरा जॉब तो है ही. फिर वो बिहेवियर में कमिटमेंट नहीं आता, और वो कमिटमेंट नहीं आता तो फिर आप उसका पूरा अपने आप को झोंक नहीं सकते. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट diving into it. You kind of invested fully into that concept. You cannot say I'm just invested somewhat. You got to invest yourself 1000% into it. Way back in 1990, in 2006-7, I remember one of the professionals, IT professionals, came to me and he said, "Sir, I'm thinking of becoming an entrepreneur and starting my own." I said, "Good." And then he spoke the same thing. "Abhi main weekend mein kaam karta hu, Saturday Sunday छुट्टी है, I'll start there." I said, "Good." He says, "आप गुड गुड बोल रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो कि मैं क्या करूं." मैं कहा, "जब तूने सोच ही लिया तो मैं क्या बोलूं?" "नहीं नहीं, आपका क्या व्यू है?" "हाँ, अभी मेरे से मेरा व्यू पूछता है तो मेरा व्यू सुन." I said, "It is either your job or either this." सर अगर नहीं चला तो अगर इतनी घबराहट है तो बिल्कुल देन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, देन डोंट जंप इनटू इट, अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी. हर किसी की बस की बात नहीं होती ना, और नहीं होती तो वो भी एंजॉय करना चाहिए कि हाँ हम वैसे नहीं है. जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करना भी बहुत अच्छी बात है, बट ये आधे आधे रहना अच्छी बात नहीं है. राइट, सो आइदर यू जंप इनटू इट और यू डोंट जंप इनटू इट. He says, "Then I think I will jump into it." I said, "Good." Then he said that I am thinking that 3 years from now I will become an entrepreneur. I said, "I have my own doubts. What will happen in these 3 years?" He says, "No, sir, I'll become a bit financially more secure and I'll get some more clarity." I said, "ठीक है. If you don't have clarity, then seek a clarity. But if you think you are clear, if you think that you have this feeling inside you, then I don't think 3 years is time you should wait. Go into it the moment you think, because abhi information wise you're ready. It's just that leap which you're not taking." और उसको कौन सी बात मेरी हिट हो गई, and within a month or so he said, "Sir, I've decided, I've put in my papers and I'm resigning and I'm starting my own." And he went on to have a great business which he sold off. Just I think 6 months back he sold off his business and he's starting another business. So almost 12 years into business which he could create
something phenomenal, and he has a success story behind him. मैं आपको फिर कहता हूं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपना जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आइए. मैं कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, then understand that it's all about making that leap, and that leap is irreversible till you have put in enough time into it and you realize कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है, then you take another leap. लेकिन ये हाफ 50-50 नहीं होता सब कुछ. I had one more. अभी मैं कल विजन प्रोग्राम में था, and I came back from there. So we had one of the participants with us in the batch, and a year back he was in that state of indecisiveness. Okay, he was staying in Canada, and Canada said, should he come to India? And then he happened to, he was there with me through Happy Minds, joining Happy Minds from Canada. And every Saturday, वो मेरा हर सुबह Saturday को Indian time में सुबह, Canada time में शाम रात को, he would listen to Happy Minds. And then one day he messaged and he says, I'm in this state, I want to have a word with you. We could not speak. I was too tied up. I said, let's talk on the chat. And he asked, he had a situation where he did not know what to do. And after some clarity from my side, he said, I'm ready for that decision. And he took a call and he took the leap to leave everything there and come to India to become an entrepreneur. And he was there yesterday in my vision session. And he says, I think the best thing that happened to me was here. And I think ये सब मेरे लिए बना हुआ है. ये जो प्रोग्राम है, ये मेरे लिए रेडी है. As if this is conducted purely for me. कि मैं वहां से आया और मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो है बिजनेस का ये विजन प्रोग्राम है. And I said, you have just made that leap. So entrepreneurship is all about taking that leap. If you're an entrepreneur, you have to understand that just one leap is not enough. You have to keep on making those leaps. Keep on making those leaps. आप ये जंप मारने में से छुटकारा नहीं पा सकते. आपका काम है कि आप ऐसे लीप्स लेते रहो, ऐसे आप जंप्स मारते रहो, ऐसे उड़ी मारते रहो. ये मारते रहना पड़ेगा. और आप मेरे से पूछो कि सर कब तक मारने का है ये? Till when? You know my answer. All of you know me. You know my answer. that जब तक है जान, तब तक आपको, जब तक आप एंटरप्रेन्योर हो, तब तक आपको ये लीप्स लेते रहने पड़ेंगे. ऑप्शन नहीं है आपके पास. One of my students, she is globetrotting now. She was in US, and then she was in Paris, and now she is in UK, and she's doing exhibitions, all those in all those countries. And she walked the ramp. 10 days back, she walked the ramp, Anju Bansal, and I'm talking, she's a young lady, 62, 63 years of age, and there she's walking the ramp. And she took the leap when she met me 20 years ago. As a homemaker, she took the leap of entering into business and jumping into business, and there's no stopping her from that time. Now she's doing a business which is spread across the North American market, and now she's going to the European market. तो ये आपको leaps लेते रहने पड़ेंगे. And she had her own ups and downs in the last 20 odd years, but she kept on making that leap. She kept on making the leap. So पहला gem, पहला मोती आपके लिए on entrepreneurship, it's all about making irreversible leaps. Your commitment has to be strong. Your commitment has to be full. You cannot be half into it. Either you're out or you're in. And that's what it has been for me the last so many years. I left my home way back when I was 22, 23 years of age. And it was a leap. I did not know what lay ahead of me. It was an irreversible leap, which I realized. Now I realize it was irreversible from my side. There were so many times when situations were tough and demanding. And there was so much of pull to go back to my hometown, to the comfort of my hometown, because वहाँ comfort था, parents थे, business था, पैसा था, मकान था, नाम थी, शोहरत थी, सब कुछ था, दोस्त थे, सब वहीं था. And then I took that leap to be here, and the first many years of my life were full of struggle. वो 7-8 साल इतने मुश्किल निकले, where every second day or so the pull of going back, the comfort of the very thought that I can go back, वो comfort इतना था, तो उसको fight करना बड़ा मुश्किल था. But somewhere I stayed put. I said, नहीं, this is a commitment which I have made, and I'm going to stay here. So वो irreversible leap था. And I've been taking leaps and leaps and leaps. Whether it be one business, another business, whatever I've been doing, it has been leaps. So understand this one gem of entrepreneurship. हाँ जी.
Could you get some clarity on this before I share the second gem? And then you can throw your questions. If you're live with me, you can throw your questions, and let's see if you have any question on what I have shared on the making the leap side. Rishi, it's time you make a leap. Not of letting go of what you have, but in what you have, you got to think and decide at what more can be done. And if you're doing a business, if you're working in a company somewhere, don't think that you got to take the leap and let go of your job. I'm saying in your job also, if you really want to grow, you can grow as an entrepreneur. Where entrepreneurship means you own that job, you own that vertical of yours, you own that position of yours. कि जैसे एक 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 entrepreneur अपनी कंपनी का मालिक होता है, आपने अपनी पोजीशन का, अपने काम की मालकियत ले ली कि दिस इज माय जॉब, दिस इज माय थिंग। और जब आप उसकी पूरी मालकियत ले लेते हो, फिर उसमें आप लीप करने के लिए रेडी हो जाते हो। You don't take a leap because you feel it's not mine. Why should I take the leap? So if you're working in a company, work as if this is mine. If not the company, that job is mine. When I say job is mine means उसके साथ जितनी responsibility है वो मेरी है, and then you are able to take that leap. The second gem which I want you to have clarity on today is that you as an entrepreneur or in entrepreneurship, you got to keep on playing the trust card. बहुत ही सुंदर gem है ये, बहुत ही सुंदर मोती है, which if you hang on and you keep it in your life, trust me, this is going to change the way you look at business, or it will bring a life transforming effect in your life. This gem says that you got to keep on playing the trust card. Now, what's this trust card? As an entrepreneur, हम काफी लोगों से मिलते हैं. We bump into people. There are people like who are our customers. There are people who become our vendors, and there are people who become our team members. तो आप ऐसे इन लोगों से मिलते हो जिनसे आपका ट्रांजैक्शन होता रहता है, एसोसिएशन होता रहता है, और आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इनसे. Now, for you to have great and rich experiences, there's one thing which you got to do is you got to keep on playing the trust card. तो ये ट्रस्ट कार्ड क्या है? Imagine कि आप एक रोड पे चल रहे हो, and as the road you're walking on the road, there after some time the road gets divided into two parts like a fork. So there is one road going left side and one road going to the right side. तो ऐसे ही जब आप लोगों को मिलते हो, तो आप सोचो ऐसा कि जब आप लोगों को मिल रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं. Listen to me very carefully. जब आप लोगों को मिलते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं. नंबर 1, पहला ऑप्शन है दैट यू ट्रस्ट देम. आप उन पे ट्रस्ट करोगे. ये पहला रास्ता है. One pathway is that you trust them and you will hold on to your trust till you get a sign which is irrevocable sign. कि मतलब ये ऐसा साइन है कि जिसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता. जब तक आपको वैसा कोई सबूत, प्रूफ ना मिले कि यार इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तब तक ट्रस्ट करते रहो. I'll repeat again. That as you're walking in this road of meeting people, you will come across a crossroad where you will have one road going to the left, one going to the right. One road says, let's trust people. And we will hold on to this trust till we get some kind of a proof that now we can't trust these people. एक रास्ता ये है. और एक रास्ता है, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे लोगों को जब तक हमें कोई सबूत ना मिले कि इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. ये भी एक रास्ता है. तो आपके सामने जब भी कोई नया इंसान मिलता है या कोई भी इंसान मिलता है, तो आपके पास ये दो रास्ते होते हैं. या तो मैं इस पे विश्वास करूं या फिर इस पे मैं विश्वास ना करूं. मैं ट्रस्ट करूं या फिर ट्रस्ट ना करूं. ट्रस्ट करूं तब तक जब तक मुझे ट्रस्ट ना करने का सिग्नल या ट्रस्ट ना करने के सबूत काफी मिल जाए, या फिर मैं उसको ट्रस्ट ना करूं
जब तक मुझे बहुत सारे सबूत ट्रस्ट करने के ना मिल जाए। ये आपके पास दो रास्ते हैं। अब द क्वेश्चन इज, आप कौन सा रास्ता चूज करते हो? आप कौन सा रास्ता चूज करते हो? एंड आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड एंड आई हैव रेड एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट एंटरप्रेन्योर्स जो कामयाब हैं, जो अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, they have always picked up the first path where they have trusted people, and they have trusted and they have held on to the trust for long till they have got enough signs कि यार अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिर उन्होंने छोड़ दिया। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज, यू ट्रस्ट पीपल। तो आपने किसी को हायर किया एंड उसने आपको यू ऑफर्ड हिम दैट द जॉब इज फॉर यू, आपने ऑफर लेटर भी दे दिया। अब लोग जो है ना ट्रस्ट नहीं करते, ये आएगा नहीं आएगा। अरे आपने जो करना था कर दिया, आपने जो ऑफर देना था कर दिया, उसने भी हाँ कर दिया कि हाँ साहब आई विल जॉइन योर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट वीक और 10 days or 1 month from now. Now trust till you have enough signs, till you have enough proof for not trusting that guy. वो ज्वाइन भी कर दिया and he's just 2 days into joining the organization, and the third day of the organization, वो सुबह आता नहीं, वो मैसेज करता है आपको सुबह सुबह कि सर वो कुछ काम आ गया, I cannot come and I'll be late or I'll come in the afternoon. And there in the morning you're thinking about it, अच्छा 2 दिन हुए इसको और 2 दिन के बाद थर्ड डे ये जो है आपसे जो है ये छुट्टी मांग रहा है या फिर ये नहीं आया काम पे, and then you have this thing, अरे यार ये तो लगता नहीं आएगा। ट्रस्ट। अभी आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर ऐसे ट्रस्ट करेंगे तो क्या बिट्रे नहीं होंगे? होंगे, होंगे। इन दिस जर्नी ऑफ अ लाइफ you will have your chances when you trust people. Sometimes they seem to disappoint you, but you don't start on disappointment, na. You start on assuming the best from people. You start from assuming the best from people. That's how you start your journey of entrepreneurship. And in this journey of assuming the best from people, there will be times when you will be disappointed or people will disappoint you. It's okay. Accept this fact. ये थर्ड जेम है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर विल बी टाइम्स व्हेन पीपल विल डिसअपॉइंट यू। आपको लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप हो कौन? भगवान हो कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, कोई आपको बिट्रे नहीं करना चाहिए। आप हो कौन? सो देयर आर पीपल, you assume the best from people. That is what you got to do. And the third gem of entrepreneurship is accepting the fact that sometimes people disappoint you. So आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब ऐसा कोई हमें बिट्रे करता है या हमारे ट्रस्ट को जो है हम ट्रस्ट करते हैं और वो उस ट्रस्ट को जो है मिसयूज करता है, अब्यूज करता है, तो क्या करें? तो यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि ये उसका इंटेंशनल बिहेवियर था क्या, या फिर एक कॉम्पिटेंसी का एक प्रॉब्लम था कि वो काबिल नहीं था इसलिए वो नहीं कर पाया? क्या उसने इंटेंशनली नहीं किया या फिर कॉम्पिटेंसी वाइज? सो ही वाज वेल इंटेंशनड इनकॉम्पिटेंट, और वाज ही इंटेंशनली नॉट राइट? तो अगर इंटेंशनली नॉट राइट है तो फिर यू नो ओके आई विल नॉट ट्रस्ट हिम। बट अगर वो इंटेंशनली राइट था, उसका इंटेंट सही था, लेकिन कहीं कॉम्पिटेंसी में कहीं वो मात खा गया, तो हम उसको सिखा सकते हैं ना। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, you kind of create a situation where you are able to take his level of performance higher, you're able to take his character levels higher, because आपने उस पे दांव लगाया, आपने उस पे bet किया। तो entrepreneurship is all about betting on people right from the beginning and not waiting for a signal to bet and then bet. It's betting, और उसमें से कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ जी, absolutely right. The best way forward is always to trust others. Absolutely, you couldn't have said it better. Not trusting anyone is your own way of blocking people
from creating opportunities for yourself. Absolutely, Parag. Yes, you said it right. तो ये दो जेम्स आज मेरी तरफ से आप सबके लिए कि ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप लीडरशिप लेवल पे हो अपनी कंपनी में, या फिर आप एज अ प्रोफेशनल हो, आई थिंक एनी पोजीशन यू हैव, आई थिंक दीज टू जेम्स विल definitely make you a better person, a better entrepreneur, a better leader. The first one I said, you got to keep on making those leaps. आप लीप लेने से आपने रोकना नहीं है अपने आप को. लीप्स कैन बी स्मॉल, लीप्स कैन बी बिग, बट यू गॉट टू टेक दैट लीप. एंड अगर आप लीप नहीं लेते हो तो इट्स काइंड ऑफ यू जस्ट वेइंग योर ऑप्शंस. एंड व्हेन यू वेइ योर ऑप्शंस फॉर टू लॉन्ग, दैट्स व्हाट यू एंड अप डूइंग ऑल योर लाइफ, वेइंग द ऑप्शंस. तो कब तक ऑप्शन देखते रहोगे यार, राइट? सो टेक दैट लीप. दैट्स वन. एंड सेकंड इज, when as an entrepreneur or as a leader you are there, you will come across people, meet people. You got to play the trust card. आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं. तो कोई कार्ड है मिसट्रस्ट का, कोई कार्ड है डाउट का, कोई कार्ड है नेगेटिव देखने का. आपके पास पूरे ताश की गड्डी है, उसमें से एक कार्ड है जिसमें लिखा है ट्रस्ट पीपल. प्ले दैट कार्ड. वो हुकुम का इक्का है. प्ले दैट कार्ड. The more you play that card, the more are the chances of you being surrounded with people who are at a higher level of performance and who are having a great character. And you will still have some bets or some, वो ताश खेलते हैं तो कोई बाजी हार भी जाते हैं ना. You will still lose. You will still have people disappointing you. It's okay. That's journey of life. I'm sure and I believe and I hope that this live YouTube was great and had some value for you. And if yes, then do tell your friends and your partners and all your loved ones to be there. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. We need lots of people to come to our channel. And we kind of late in coming into this online world, but देर आए दुरुस्त आए वाली बात है. So would want your support and love and help to make this channel progress and move on. So would want all your support. Sometimes the trust makes below, I'm not able to understand this, below zero. तो फिर आप कुछ questions होगा मुझे पूछेगा. Maybe next live when we have next week on Wednesday, maybe I'll answer those questions. You can shoot your questions on the YouTube, or you can send us a message, and we'll see how, to the best of our ability, we will answer those questions. So all the best to all of you. Namaste everybody, and stay alive, stay charged, and I'll see you on Saturday morning for the life lessons on Happy Minds. God bless.